Good morning, all of you. How are you? I hope you are superb. I Priyanka. Welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 6 of unit 3, states of matter and force. We learned about liquids and its particle structure in our last class. Can someone tell me what are liquids? Yes, state of matter that does not have a definite shape. Why can liquids flow freely? Yes, the particles are loosely packed. Great. Name two thick liquids. Glycerin and honey. Very good. Name two thin liquids. Milk, juice. Very good. We learned about the solids and how particles are arranged tightly in the solids. That gives them the definite shape and how loosely they are arranged in a liquid. Today we will see how particles are arranged in the gases. First of all, we will do an activity and you will do this activity yourself also. Okay? This activity yourself. Particle arrangement in gases. During playing, you can do this activity. You will stand like this and like this particles of gases arranged means randomly arranged the particles in gases. There is a lot of space between them, so that's why they can move freely. Okay? This is how particles are arranged in gases. Particles are randomly arranged in the gases, which makes gases flow freely. Understand? How are the particles arranged? Yes, randomly. Is there any space among the particles? Yes, there is a lot of space among the particles. Now you will open your student reader. SR4 you will open. I'll count down 5 to 1 and you will open your SR. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened. Now let's start. Properties of gases. Structure of gases. Gas is matter that flows freely. Gas is also a state of matter जो बिल्कुल freely flow करता है. It does not have a shape of its own. इसके पास भी अपनी खुद की shape नहीं होती है. And fills up the space. In gases, the particles are randomly arranged and there is a lot of space among the particles. बेटा you can see in the picture, यहाँ पे बहुत सारा space है ना? So, thus due to the random arrangement of their particles, gases don't have a definite shape and can flow freely. आप देखो इसमें कहीं कहीं ये पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो वेरी लूजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? इन द गैसेस. और जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर पाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट शेप. गैसेस के पास भी अपनी खुद की शेप नहीं होती है. दे फ्लो फ्रीली, और वो बिल्कुल फ्रीली फ्लो करते हैं. दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं यानी कि स्थान भी घेरते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर, यानी कि बैलून के अंदर जब एयर फिल हो गई तो जो बैलून का साइज है वो इंक्रीज हो गया बेटा. ओके, एंड इट अकर्स ड्यू टू द गैस. वी कैन फील और स्मेल गैसेज. हम गैसेज को महसूस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, बट कांट सी दैम. लेकिन हम गैसेज को देख नहीं सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द एयर फिल्ड इन अ बैलून. एयर एज गैस. एयर इज अ फॉर्म ऑफ गैस. इट इज ऑल अराउंड अस. एयर गैस की फॉर्म होती है बेटा, और ये हर जगह होती है. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू लिव. हर लिविंग बीइंग को सर्वाइव करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. वी कैन नॉट सी एयर. हम एयर को देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट. हम इसको महसूस कर सकते हैं. एयर मूव्स इजीली एंड फिल्स अप ऑल एम्प्टी स्पेसेस. जो एयर होती है वो
इजीली मूव कर लेती है बेटा, और आप किसी भी एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी स्पेस जहाँ पे भी इसको मिल जाए तो वहीं पे ये फिल हो जाती है. लाइक एयर, मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन बट वी कैन feel or smell them. Given below are some examples. You can see here, air is all around in this garden. The girl and the plants are breathing in the air. Now in next picture, air is inside this balloon and has taken its shape. Now in the third thing, that is air is inside this box too and it fills up द बॉक्स, यानी कि ये बॉक्स के अंदर भी एयर प्रेजेंट है. ओके, नाउ यू विल टेल मी, डू गैसेस हैव अ डेफिनेट शेप? नो. वेरी गुड. कैन दे फ्लो फ्रीली? यस, दे कैन फ्लो फ्रीली. कैन दीज पार्टिकल्स फिल अप द स्पेस? यस, गैस पार्टिकल्स कैन फिल अप द स्पेस. नाउ आई विल शो यू CRL and you will watch the CRL carefully. And after that you will do this activity yourself. Okay, you will do this activity yourself. Particle arrangement in gases. Step 1, you will draw the balloon filled with air as shown in the figure. Okay, after that you will prepare small particles as shown using the play-doh or atta. You can use bindi of your mother. Then you will start arranging the particles made in balloon randomly so that there is a lot of space among the particles. This is how the particle arrangement in a gas should look like. You will arrange the particles of gases like this. Okay, thus we see that particles are randomly packed in gases. It is due to this arrangement of particles that gases flow freely, because gases particles randomly packed, so that's why they can flow freely. Now you will open your worksheet number 6 and you will do question number 2. What is the question number 2? Draw how particles are arranged in gases. Gases के अंदर जो हमारे particles होते हैं वो कैसे arranged होते हैं? Randomly होते हैं ना? So that's why you have to draw the particles arranged in the gases. You will do it now. Okay? I hope you have done. Have you drawn like this? Okay. Like this you can also draw. Today we saw how particles are randomly arranged in the gases and there is a lot of space for the particles to move. Thus, gases flow freely and fill up the space. Now let's discuss the homework. You will do question number 1 of worksheet 6. Read SR4 and underline the definition of gas and how particles are arranged in the gases. Okay, bye. Happy learning.